Good morning. Today I will start data representation system, okay, and number system, and at least 7 to 8 question may come from this part, and each question may carry to 2 marks each. Let me finish, then I will also discuss about the question paper. In case I am not getting as per your timetable, this one periods, then I will put one video, and in that video I will explain about the question paper. Got it? So we'll start now. And in today's class, we are starting data representation number system. Now, the different data representation system, that is binary, decimal, octal, hexa. Okay. So binary means 2. Remember that. Binary means 2. Decimal means 10. Decimal means 10. Octal means 8. Okay. And hexadecimal means 16. Okay. So when the base I'll write 2, that means it will have 2 digits. When I write the base as 10, it will have 10 digits, 0 to 9. When I write base 16, that means it will have 0 to 9, and B, C, D, E, F, that way. Got it? So all this number system I am going to teach you today. So we'll start with binary. One more example, 1 or 2 example I will give you, and if I get some more time, I'll put one more video. So first you learn this. First one is binary. So binary का base 2 होता है, decimal base is 10, octal 7, hexadecimal 16, sorry 8, octal 8, hexadecimal 16. Okay, so this is the 4 type of number system which I am going to teach. I will teach you how to convert binary, decimal to binary, binary octal to binary, and so on. मैं जल्दी आपको करा रहा हूँ और इसको समझना. So we'll start first binary to question number 1. Convert binary number to decimal. Convert binary number to decimal. Now binary number I am taking as 1101. This is my binary number, and I have to convert this to decimal. So see, binary base I have written 2 and decimal base is 10. So now we will take this. Either you can start from here or you can start from here as you wish. Just count it. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. If you are starting from here, total you have counted 5. That is 1 into 4 to 0, 5 ही होंगे. 4, 3, 2, 1, 0, 5. 4, 3, 2, 1, 0, 5. So पहले इस digits को count करो. If you are starting from here, then you write 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. Okay? 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1. 1 plus 1 into 2 to the power 0. So this 4, 3, 2, 1, 0 power you have to give this way. First count the digit and आप यहाँ से start करेंगे last से 0 तक जाना है. If you have 5 digits, then start with 4. If you have 6 digits, then start with 5. If you have 7 digits, start with 6 to 0. That means total 7. So 2 to the 4 to the 8 to the 16. 16 to the 16 plus 8 plus 0 plus 0 plus any number to the power 0 is equals to 1. Any number to the power 0 is equals to 1. 2 to the power 0 is equals to 1. So 1 into 1 is equals to 1. Just add it. 16, 8, 1. 25. Okay.
So this is the 25 and this 25 is actually decimal conversion. Got it? Convert binary number to decimal. Who is having problem, please ask me. Otherwise show thumbs up so that I will come to know that you have understood. Convert binary number to decimal. All of you have understood, I think. अब मैं नेक्स्ट लूंगा डेसिमल टू बाइनरी. फिर मैं और एग्जांपल ले लूंगा. पहले मुझे एक एक एग्जांपल सबके लेने दो. डेसिमल टू बाइनरी आई एम टेकिंग. नेक्स्ट इज योर. अब आपका मैं जानबूझ के 25 लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि रिजल्ट इज दिस ओनली डबल 1 0 1 डबल 1 डबल 0 1. So next is your convert decimal to binary. Decimal to binary. Now what you have to do with decimal? Suppose I am taking the number as 25 and then you have to convert it to binary. Nothing great. मैं जैसे वो कुछ मुश्किल नहीं है. Just start 25 divided by 2. 12 to the 24. What is the remainder? 1. You have to keep remainder in mind. 2. 6 to the 12. What is the remainder? 0. 2 3 the 6. What is the remainder? 0. 2 1 the 2. What is the remainder? 1. Now you check. You have to write the number this way. 1 1 0 0 1 finally. तो आप चेक कर सकते हैं exactly same result आएगा. Do you know? You have to write from here. We have started with double 1 0 0 1 that is binary to decimal 25 and 25 to जब convert किया तो 1 1 0 0 1 आ गया. If you have any problem, please ask me. Understood? Then please show thumbs up. If not understood, show thumbs up down. Then I will explain it again. Manav, have you understood? So these options, these two conversion I have already explained. Now next conversion we are going. Next conversion is your decimal to octal. Decimal to octal we are going. Decimal to octal we have. Now any decimal number we will take. Convert decimal to octal. Suppose I am taking 492. 492. This is the decimal number. Octal number cannot have more than the digit 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 will be in octal. जो octal के result आएगा up to 7 आएगा. 0 to 7. ठीक है? Decimal 0 to 9. Binary 0, 1. Hexadecimal 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. That way. So this is 10 and it has been converted to the octal 8. So what I will do here? 492 को divided by 8. 8 6 are 48, 1 and 2. 8 ones are 8, remainder 4. ठीक है? Now next is your 8. 8 sevens are 56. 5. Okay, this is the conversion. Now you convert this. Check this. आप check कर लेना. 8 6 are 48, 1 and 2. 8 1s are 8. Remainder 4. 8 7s are 56. Remainder 5. Okay. Now what is the octal representation? Start from here 7 5 4. And this is the octal. Have you understood? Please show thumbs up so that I will go ahead. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो just show thumbs up down.
Otherwise, thumbs up. There may be a possibility that some details or some calculation are wrong. Okay, good, you have understood. So next I will take octal to decimal. Just remember three type of conversions I have completed. Now I am going to start octal to decimal. Okay, like binary to decimal we have done. So 754 only I will do purposely so that we will verify the result. 754. This is the octal number and then it has to be converted to decimal. Now what you have to do, just count 1, 2, 3. Three numbers are there. Then you have to write 7 into 8 to the power 2 plus 5 into, starting from here, 1, 2, 3 numbers, 2, 1, 0. Remember that 5 into 8 to the power 1 plus 4 into 8 to the power 0. Okay? So 8 8 64. 64 7 448. 8 5 40 plus any number to the power 0 is equals to 1 4. So 4 4 8 4 0 and 4 12 4 4 8 9 492 was the question. Yes or no? My question was 492 and the same answer has come. So this is your octal representation of, decimal representation of octal. (492). So four type of conversions completed. Ask theory. अभी मैं यहाँ पे किसी का unmute करके पूछ लेता हूँ. Ask to unmute. Noel, please tell me. Do you have any problem in conversion? Binary to decimal. Number will not be same, may be different, but you should know the method. Just give me response. Sir, how the 4 came in 4 into 8 to the power 0? See, just count it. 1, 2, 3. So 7 into 8 to the power 2. 8 बेस है बेटा. ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है. तो जो बेस होगा उसी पे पावर होगा. अंडरस्टूड? Yes or no? 8 to the power, starting with 2 1 0 that way. आप 0 से आगे नहीं जा सकते, माइनस में नहीं जाना है. और अप टू 3 डिजिट्स 2 1 0 3 डिजिट्स आया 1 2 3. 7 into 8 to the power 2 plus 5 into 8 to the power plus 4 into 8 to the power 0. Noel, last time I'm asking you, कोई भी नंबर हो, अगर ये 4 डिजिट नंबर होगा, सपोज यहाँ 1 होता है 1754, तो 1 into 8 to the power 3 प्लस 7 into 8 to the power 2 प्लस 5 into ऐसे बढ़ जाता आगे. आ रहा है समझ में? Michelle is showing thumbs up. Samriddhi, good. So you all have. Yes, sir. Okay, good. Okay, unmute yourself. Now next is your next conversion. I'm coming. Next conversion is decimal to अभी आपको एक चीज पहले समझा दूं. हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल 0 to 9 A B C D E F. तो 0 to 9 A मतलब 10 11 12
13, 14, 15. Remember that 14 and 15. बात समझ में आई? 0 to 9 एंड जब 10 आएगा रिमाइंडर तो A लेना है, B है तो इसका मतलब 11 है, कैलकुलेशन में 11 यूज करेंगे, C है तो 12 है, D है तो 13, F है तो 15. ट्राई कर, यू मस्ट नो दिस, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी. हेक्साडेसिमल का मतलब ये होता है. अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. एनी नंबर आई टेक 9, कुछ भी ले लेते हैं, 9, 3, 5. अब 16 की टेबल तो मुझे याद नहीं है, तो हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं. ओके, यू नो ना, आई मेड द प्रोग्राम टेबल वाला. आपके पास है कि नहीं? Python ideally, I don't know if saved it or not. Okay, so टेबल मुझे याद नहीं है, तो टेबल देख लेते हैं जल्दी से अगर स्टार्ट हो जाता है. फाइल, ओपन, टेबल, ओपन. हाँ नहीं है, कोई बात नहीं. एंटर. ठीक है, n 10 तक का टेबल बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये फिर रहने दें फॉरेन, ये भी सेम रहने देते हैं और यहाँ पर आके n इंटू आई कर लेंगे, टेबल हमारी आ जाएगी. n इंटू आई, दैट टेबल विल कम. ओके, सो आई विल शो यू हियर. रन n into I. I is small. Run module. Okay, so I'll take the table of 19. Okay, 19, 38, 57, 66 and so on. So 19 time it is coming, इसको 10 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, so 10 time exactly आ जाएगी. Run module. Okay, so मैं जल्दी जितना करना चाहता हूँ उतना ही लेट करता है. लास्ट टाइम ये रन कर दूँ. रन मॉड्यूल. ओके, 19 की टेबल. ओके, स्क्रीन इज शेयर और नॉट? आई डोंट थिंक स्क्रीन इज शेयर. स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. देखो ये टेबल मेरे पास है, सो 19 की. ठीक है, अब मैं स्टॉप शेयर करता हूँ ताकि आपको बोर्ड अच्छी तरह दिखे. मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो अपने लिए रख लूँगा टेबल. रिस्टोर, इसको किनारे पर रखिए. ओके, थोड़ा सा रुको, दोनों स्क्रीन सेट कर दें. नहीं हो रही, इसको और छोटी करते हैं. ओके, इसको भी थोड़ा रिस्टोर मोड में डालते हैं. ओके, participants minimize, मोड थोड़ा चेंज करते हैं. चलेगा, चलो ठीक है. So we are going to convert now. So what is the number here? After that I will make maximize 935, and that has to be converted. This is decimal, has to be converted to
hexadecimal. So 93, 95, 90, 1, 2, 3, 4 times. 935 and why I was making the table of 19, it has to be 16, no? क्या कर रहा हूँ उल्टा सीधा था टेबल ऑफ 16 लेना था ना क्या कर रहा हूँ इसमें 16 okay so 96 has come 93 that means 80 1 2 3 4 5 times छोड़ो अब अपन खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे यार इतना ज़्यादा बंद करो इसे मैक्सिमाइज करो ओके व्यू गैलरी में गड़बड़ा गया स्पीकर व्यू ओके आई वांट टू मैक्सिमाइज इट remove all pins okay escape and then I will maximize myself okay so छोड़ो और हो गया 16 5 are 13 remainder 135 now 16 table 16 okay 16 table just see here 16 5 the 7 the 7 6 the 7 okay what was the remainder here 16 so I will not take, I will take a small number because this is converted way. Such a number I will take here 17,175. Look, ये हो गया मेरा decimal and then I will convert this into 6. Simple हो गया 175. मैं वहाँ हिसाब से simple किया. So 16 1 16 1 and 5. So 16 1 are okay so 1 and 5 अपने डिवाइड होगा ये that means remainder is 0 नहीं होगा 1 and 5 1 and 2 okay please see that this one we are converting 15 175 15 16 1 61 remainder and then 5 we are taking here okay it is not divisible one time only divisible coming remainder as 15 okay and this one 0 so 0 means a into 16 to the power 1 plus 15 160 ठीक है 15 into 16 to the power 0 that is 8 10 into 160 plus 50 is equals to 175 so the result is coming 10 and 1 5 10 का मतलब is a and 15 means f so af 16 is the conversion for the number 175 आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई प्लीज शो थम्स अप
मैंने वेरीफाई कर लिया रिजल्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज AF16, remainder is 10 and question is 10 and remainder is 15. So A and 15 means F. This is converted to 16. Now I will do the next. पहले इसे नोट कर लो 175. आप सीधी सी बात है, टेबल याद होगी फटाफट कर लेंगे. आई एम अ लॉजिकल प्रोग्रामर, तो मेरे लिए बहुत सारे टेबल याद करना पॉसिबल नहीं होता है. तो आई हैव डन दिस 175 10. Okay, 16 10 का 160, remainder is 15. So we will always write this way. So 10 means A and 15 means F. आप सब please show thumbs up so that I will go ahead. अभी मुझे एक आध चीजें और पढ़ानी है, टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास. Okay, so we'll start. Next is your hexadecimal. Convert hexadecimal to decimal. Hexadecimal to decimal. Next is your hexadecimal to decimal. Hexadecimal to decimal. And this time again I will take AF so that we will verify the result it is coming 175 or not. I will take AF. AF 16. A means 10, F means 15. Got it? So 10, 1, 2 are there. So 10 into 16 to the power 1 plus 15 into 16 to the power 0. 10 16 is 160 plus 15 1 is 15. Any number to the power 0 is equals to 1. Total 175 and that's the decimal number. आपको समझ में आया तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं समझा दूंगा. अभी मैं देख रहा हूँ कि थम्स अप का डाउन हो गया, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. भैया सर all the questions are same. When you are converting hexadecimal to decimal, you have to just count 1 2. A stands for 10 and F stands for 15. मैंने लिख दिया यहाँ पे. 10 into आपका हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, जैसे बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, इसका 16 to the power 1 plus 15 into 16 की 2 0. 160 plus 15 into 1 15. Any number to the power 0 is equals to 1. 160 plus 15 is equals to 175. Is it clear? Okay. Next point is convert. हो सकता है मेरा टाइम खत्म हो जाए, उससे आप परेशान मत होना. कन्वर्ट 3 मिनट्स मेरे पास है. सो कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी. कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ये बहुत इजी है. कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी. ऑक्टल टू बाइनरी. अब मैं आपको बहुत आसान सा एक ट्रिक बता देता हूं. वी आर टेकिंग हियर ए बी सी. नाउ ऑक्टल हैज एक फॉर्मूला याद रखो, 2 to the power n. n means number of bits या number of variables बोलो, number of bits. अगर 2 का पावर 3 8 हो जाता है, ठीक है. सो अगर आप 3 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन 3 वेरिएबल्स लेंगे, 3 बिट्स लेंगे, तो उसकी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगी. रिमेंबर दैट n इज नंबर ऑफ बिट्स. 2 to the power 3 is equals to 8. 2 to the 4 to the 8. Now ये 8 कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 0 2 1
2 0 2 1, मतलब आपको 4 0 देन 4 1 लेना, फिर उसका हाफ करना है, दैट इज 2 0 2 1, फिर उसका भी हाफ करना है, दैट वे 0 1 0 1 0 1 0 1. This stands for 0, this stands for 1, this stands for 2, this stands for 3 4 5 6 7. कन्वर्ट करके भी देख लो तो यही आएगा जो मैंने लिखा है. 0 0 0 stands for 0 ही रहेगा 3 बिट्स में, एंड 7 को आप कन्वर्ट करो बाइनरी में 6 5 4 3 2, सब में यही रिजल्ट आएगा. अब मैंने ऑक्टल नंबर ये चार्ट याद रखना. हाउ वी हैव मेड, we are taking 3 bits A B C. Okay, we are taking 3 bits A B C and then 8 मिनट से कम टाइम है. सो अब देखते हैं कितना होता है. सो जल्दी से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. 4 5 7 ये ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो 4 स्टैंड फॉर 100, 5 स्टैंड फॉर 101 and 7 स्टैंड फॉर 111. अरे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया. आप चार्ट में देख लो. 7 111, 5 101, 4 100. Okay, understood? So the time is getting over, so I will keep my class till here and I will put one more video after this. Okay, meantime if you want to join some other class you can join. So I will complete my class in another video. Take care, bye.